नए नए इनोवेशंस में दूर सुदूर क्षेत्रों में डिजिटल टेक्नोलॉजी की स्वीकार्यता में भारत के युवाओं की बड़ी भूमिका है। बीती वर्षों में भारत ने जिस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए निर्णय लिए हैं, नीतियां बनाई गई है, इससे भी देश में एक नई शक्ति का संचार हुआ है। मैं चाहती हूँ कि हमारी सभी बहनें व बेटियां अधिक से अधिक सशक्त हो तथा वे देश के हर क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाती रहें। मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहती हूँ कि आप न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि भविष्य के भारत की नींव भी रख रहे हैं। देश के राष्ट्रपति के तौर पर मेरा हमेशा आपको पूरा सहयोग रहेगा। देवियों और सुजों, विकास और प्रगतिशीलता का अर्थ निरंतर आगे बढ़ना होता है, लेकिन साथ ही अपने अतीत का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। आज जब विश्व सस्टेनेबल प्लैनेट की बात कर रहे हैं, तो उसमें भारत की प्राचीन परंपराओं, हमारे अतीत की सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की भूमिका और बढ़ जाती है। मेरा जन्म तो उस जनजातीय परंपरा से हुआ है जिसने हजारों वर्ष से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया है। मैंने जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस किया है। हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति से सेवा भी करते हैं। यहाँ संवेदनशीलता का आज वैश्विक अनिवार्यता बन गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शक बन रहा है। देवियों और स्वजनों, मैंने अपने अब तक के जीवन में जौन सेवा में ही जीवन की सार्थकता को अनुभव किया है। श्री जगन्नाथ क्षेत्र के एक प्रख्यात कवि भीम भोई जी की कविता की एक पंक्ति है, मो जीवन पचे नर के पड़ी था जगत उद्धार। अर्थात अपने जीवन के हित और हित से बड़ा जगत कल्याण के लिए कार्य करना होता है। जगत कल्याण की इसी भावना के साथ मैं आप सब के विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा व लगन से काम करने के लिए सदैव तत्पर रहूँगी। आइए हम सभी एकजुट होकर समर्पित भाव से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े तथा वैभवशाली व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय। Honorable President, Srimati Draupadi Murmu ji, respected Sri Ramnath Kovind ji, Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi ji, Speaker of Lok Sabha Sri Om Birla ji, Chief Justice of India Sri N.V. Ramana ji, respected parliamentarians, other dignitaries, brothers and sisters, and my dear fellow citizens, Namaskar. Madam President, you have just addressed the members of the Parliament. I wish to read a few paragraphs from the English version of the address, and the rest may be considered as read in view of the time constraint. I express my heartfelt gratitude to all members of Parliament and legislative assemblies for electing me to the highest constitutional post of India.
Brothers and sisters, we have to work at a fast pace in this Amrit Kal to fulfill the expectations of our freedom fighters from the citizens of independent India. In these 25 years, the path to attain the goals of Amrit Kal will proceed on two tracks, Sabka Prayas or Sabka Kartavya, everyone's efforts and everyone's duty. The new development journey towards the bright future of India has to be undertaken by our collective efforts following the path of duty. We will be observing Kargil Vijay Divas tomorrow, July 26th. This day is a symbol of both the bravery and the restraint of the Indian armed forces. Today, I extend my best wishes in advance to the armed forces of the country and to all the citizens of India. Brothers and sisters, growth and progress mean continuously marching ahead. But equally important is awareness about one's past. Today, when the world is talking about sustainable planet, the role of India's ancient traditions and sustainable lifestyle becomes more important. I was born in the tribal tradition which has lived in harmony with the nature for thousands of years. I have realized the importance of forests and water bodies in my life. We take necessary resources from nature and serve nature with equal reverence. This sensitivity has become a global imperative today. I'm happy that India is guiding the world in the field of environmental protection. Brothers and sisters, in my life so far, I have realized the meaning of life only through public service. There is a line from the poem of Bhim Bhoi Ji, a famous poet of Sri Jagannath Kshetra. Mo jibana bacche, narke paditav, jagata uddar hev. That is, working for the welfare of the world is far greater than one's own interest. With the spirit of welfare of the world, it always be ready to work. All of us, with full devotion and dedication, to live up to the trust you all have reposed in me. Let us all unite and move forward on the path of duty with a dedicated spirit to build a glorious and self-reliant India. Thank you. Jai Hind. राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। नमस्ते करेंगे।
So 25th of July, yet again going down in Indian history as a significant day. The 10th successive president to have been sworn in today. Madam Draupadi Murmu was sworn in as the 15th president of India a short while ago. The oath of office was administered to her by Chief Justice of India, N.V. Ramana. The ceremony has now concluded. In fact, after the oath-taking ceremony, which was followed by a 21-gun salute and the first address of the 15th president, which was then, excerpts of which were also translated in English and read out by Vice President and Rajya Sabha Chairman Mr. M. Venkaiah Naidu. The ceremony in the Central Hall of Parliament has now concluded. And as you can see, the 14th President of India, Mr. Ramnath Kovind, the new President, Madam President Murmu, along with other dignitaries now leaving for the Rashtrapati Bhavan. तो तमाम इतिहास जो आज इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ हमने बनते देखे, आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति देश को मिली है। साथ ही हम देख रहे हैं कि अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना होंगी और राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में हैंडिंग ओवर सेरेमनी होगी और इसके बाद राष्ट्रपति भवन से रामनाथ कोविंद विदा होंगे। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। संसद भवन से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देश में दूसरी बार सर्वोच्च पद पर महिला आसीन हुई हैं। कई मायनों में आज हमने इतिहास को बनते देखा है और तमाम बड़ी बातें जो आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कही हैं। उन्होंने नई भारत की नई तस्वीर का जिक्र किया और कहा कि वो तमाम देशवासियों की जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनका अभिनंदन करती हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक महत्वपूर्ण कालखंड है जिस दिन उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि एक और महत्वपूर्ण पड़ाव जब देश ने आज़ादी के 50 साल पूरे किए, उस वक्त उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और आज जब देश अमृत महोत्सव मना रहा है, उस वक्त उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। Absolutely, and significantly, as the new Commander-in-Chief of the Indian Armed Forces, the President also hailed the contribution, the grit, the valor of the security forces, the Indian Armed Forces, who continue to guard us. And as 26th of July is remarkable in Indian history, we celebrate Kargil Vijay Divas on this very day. Just a day before that, Madam President Murmu has taken oath as the 15th President. And the President in India is the Commander of the Indian Armed Forces.
तो एडवांटेज है ना 15 सेकंड का। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ले ली है और अब देश की 15वीं राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के बाद संसद के केंद्रीय कक्ष से उनका प्रस्थान उनके आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन की ओर, उनका काफिला संसद भवन से प्रस्थान करता हुआ 25 जुलाई 2022 का दिन इतिहास में दर्ज होता हुआ देश के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को शपथ ली थी। उसके बाद हर राष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा किया है और 25 जुलाई को ही शपथ ली है। राष्ट्रपति अंगरक्षक राष्ट्रपति के काफिले के आगे आगे और उनके साथ नई राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अपने आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन की ओर ये काफिला विजय चौक से अब रायसीना पहाड़ी की ओर बढ़ता हुआ। Srimati Draupadi Murmu is now the 15th President of the Republic of India. She now sits as the constitutional head of the nation. As the President's bodyguard, escort the President's carcade towards Rashtrapati Bhavan. Personnel of the armed forces lined on either side of the path, going up the Raisina hill, salute and present arms. It's a special day for the nation, not only because of Srimati Murmu's selection and election as president, a great message for democracy in itself, but also witnessing the graceful, smooth transition of power. The exchanging of positions as seated in the vehicle, the exchanging of positions as seated in the study, all indicative of how power transitions. The seat of power, the North Block, the South Block, the seat of governance, the Parliament House, all standing silent witness to this special moment. ये समारोह बेहद भव्य और परंपरा से भरा हुआ। इसमें ध्यान से देखें तो ये समझ में आएगा कि किस तरह शपथ ग्रहण से पहले और बाद में जो क्रम होता है पूर्व राष्ट्रपति का और वर्तमान राष्ट्रपति का, वो किस प्रकार से बदलता है। और यही हमारे इस प्रजातंत्र की विशेषता है, जहां हस्तांतरण सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जिस प्रकार से होता है वो मिसाल है। और पारंपरिक भव्यता के साथ इन कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है। एक नया अध्याय
भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में जुड़ता हुआ भारत की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ अब पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन की ओर अग्रसर हैं। विजय चौक से रायसीना पहाड़ी की ओर दोनों ओर तीनों सेवाओं के पर्सनल तैनात उन्हें सम्मान देते हुए और सजीले घुड़सवार अंगरक्षक रायसीना पहाड़ी पर मुख्य द्वार जो भव्यता का प्रतीक इस भव्य और आलीशान इमारत राष्ट्रपति भवन का, यहां से काफिला अब इसके मुख्य प्रांगण की ओर। We can see the imposing dome, the Jaipur column, and the pathway leading up to the forecourt of Rashtrapati Bhavan. With high positions comes a higher sense of responsibility. Power has as its companion, a constant companion, responsibility. The working on the advice of the elected government, the President of India, is the protector of the Constitution. Srimati Murmu, as our new President, will hold in her heart and her hands a responsibility to ensure that the last mile, the last person is connected, interconnected, and belongs to a nation called India, a nation that is progressing. The last person has an equal share in the growth, prosperity, and progress of the nation to actually make democracy truly meaningful. बिल्कुल, अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे कई क्षण होते हैं, कई अवसर होते हैं जब राष्ट्रपति की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें सामाजिक जीवन का, जिनका अपना खुद का जीवन सादा और ज़मीन से उनका जुड़ाव, वो समझती हैं एक साधारण व्यक्ति के दर्द को भी, उसके संघर्ष को भी, उसकी आकांक्षाओं को भी, भविष्य के उनके निर्णयों के लिए उनका यह अनुभव बहुत ही सार्थक और बहुत ही प्रासंगिक होगा। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर देश के प्रत्येक व्यक्ति के हित के लिए निर्णय लेते हुए उनका अपना निजी अनुभव, जो उनका जीवन है, वो अनुकरणीय है। In fact, Srimati Draupadi Murmu started her political career at the grassroots levels as a councillor. And after that, her movement upwards, also as the first woman governor of Jharkhand. She has faced immense challenges. She has had to take many important decisions. But now she will be keeping the nation and the constitution ahead of all her decisions. Arriving here at the forecourt of Rashtrapati Bhavan, to her official residence now. पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का आगमन राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू
सलामी देगा राष्ट्रीय सल्यूट मध्य ब्रेक। PBG Commandant Colonel Anup Tawari giving the command. The President of India, Srimati Draupadi Murmu, boarding her vehicle along with former President Shri Ramnath Kovind. ये काफिला नॉर्थ कोर्ट की ओर बढ़ता हुआ, जहां से अब राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति कमेटी रूम की तरफ जाएंगे। Here at the North Court, awaiting the arrival of the new president, personnel and staff of Rashtrapati Bhavan. Greeting their new president. राष्ट्रपति भवन स्वागत कर रहा है नए राष्ट्रपति का, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। The president moves towards the committee room and also her new office and her new residence. राष्ट्रपति भवन के इस भव्य गलियारे पर पूर्व राष्ट्रपतियों के चित्र, कावेरी जो कमेटी रूम है उस ओर प्रस्थान। This magnificent building, sandstone, pink and cream, the Rashtrapati Bhavan has a fabulous history of its own. Welcome to Rashtrapati Bhavan, the office and home of the President of India. Completed in 1929, Rashtrapati Bhavan, designed by Edwin Lutyens and Herbert Baker, is one of the most magnificent presidential palaces ever built. The erstwhile symbol of colonial power and imperial domination is today representative of Indian democracy, of its inclusiveness, plurality and secularism. This is not just the residence of the constitutional head of the world's largest democracy, but also in terms of area, the largest residence of a head of state anywhere in the world. The office of the President is called the Study. This is the formal meeting place for the President where he receives his guests and visitors. Murals by eminent artist Sukumar Bose inspired the look and color scheme of the Study.
Gifts received by various presidents adorn the study. The study opens into the morning room. The president meets dignitaries here. Each room in the Rashtrapati Bhavan stands witness to history. To restore these to their former glory, the restoration team had to rearrange available resources in view of the heritage nature of the rooms. Work was undertaken in each room to revive its distinct character, just like the way they were originally meant to be. Fascinating works of art by reputed Indian and European artists were restored to add character to the walls. Darbar Hall is where the first government of independent India was sworn in. Lutyens designed new viceregal thrones for the Darbar Hall to replace those from Government House in Calcutta. With new flags, paintings and a warm look, Darbar Hall has regained its past grandeur and is now used for hosting civil and defense investiture ceremonies and for conferment of other national and international awards. Next to Darbar Hall is the library. It is also described as the daughter of Darbar Hall. Besides priceless publications from the 19th century onwards, it also has more than 2,000 rare books. They are now being digitized and preserved for posterity. Ashoka Hall was originally built as a state ballroom. It is now the venue for accepting credentials of foreign envoys and other formal functions. Embellishments on the ceilings, carpets and chandeliers reveal the stately splendor of the room. The New Age President's Estate is gearing up to present itself as a prime tourist attraction with 3 distinct tourist circuits: the main building, gardens, and museums. Almost 60% of the President's Estate, that is more than 190 acres, is green, comprising dense foliage and rare flora and fauna. Besides the spiritual, herbal, cactus, and nakshatra gardens, it includes the sprawling Mughal gardens. Rashtrapati Bhavan, declared a Grade 1 heritage structure in 2009, is an iconic living heritage.